7th pass karo, because there are the situations, there are the questions which come in our mind as to what am I supposed to do now, whether I should be choosing commerce as my stream, whether I should be choosing science as my stream. And I pity this education system. I have that's my personal opinion कि 10th तक के हमको साइंस ही साइंस पढ़ाया जाता है. 10th तक हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब पढ़ाया जाता है, और अचानक से 10th के बाद पूछा जाता है अब बताओ कॉमर्स करोगे क्या. अरे हमको कॉमर्स का सी भी पता नहीं है. ऑन व्हाट बेसिस शुड बी डिसाइडेड? एंड देन we try to think, we try to decide on the basis of कि चलो कोई नहीं, हम लोग साइंस ही ले लेंगे क्योंकि हमारे परसेंटेज अच्छे आए हैं. वी हैव गॉट 90%. व्हाट इज योर एवरेज परसेंट? तेरा परसेंट कितना है? 88. योर्स इज? नहीं, सीबीएसई रिजल्ट आना बाकी है. अच्छा, सीबीएसई सेम. एंड योर्स 88. So we get your son or daughter CBSE. Okay. So we have this kind of thought ki we have got 80% result, we have got 90% result, and when that 80 and 90% result comes, at that time we start thinking ki why not to do science, क्योंकि सारे options open रहते हैं. But I'll congratulate you all people who have come here and who have been attending it online ki you at least are giving the thought, yes, commerce is also possible. And mind well, हम लोग जब डिसाइड करते थे तो हम लोगों के लिए भी यही क्राइटेरिया होता था. बट आज की तारीख में अवेयरनेस मार्केट में इतना बड़ा हुआ है, तो हम लोग जब भी किसी को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको तय करना है कि आफ्टर 10th व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, ऑफ कोर्स कॉमर्स में क्या क्या करियर्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीजों के बारे में तो हम लोग डिलिब्रेट करेंगे. आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, व्हाट ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल, how much time that a course will be requiring, how much money that is required to be spent in that. These all we are going to discuss. But along with that, still if the question remains science or commerce, तो मैं कई बार जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है कंसल्टेंसी के लिए, मैं उसको यही कहता हूं कि you should have 5 main things that you should focus upon while deciding about your long-term career. As what? Number 1, how much time will be required for completing the given course? Whether you are going in medicine, you are going in engineering, you are going for commerce, whichever course you are going, how much is the time that you require for completing that particular course? Number 2, how much of the efforts that you will be required to put into that? Number 3, how much of money will be required to be spent for completing that particular course? ये तो हो गई बात कोर्स कंप्लीट करने के लिए. उसके बाद सवाल बनता है कि चलो मैंने एक पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर भी लिया, तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू मेक एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दोज आर अवेलेबल टू मी. Because if I'm not thinking of these all things, if I'm not deciding on all these things at this point in time, later on we may be required to follow what is followed by the herd. भाई तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो नीट करेगा, मैं तो JEE के लिए जा रहा हूं. चल ठीक है, मैं भी वही कर लेता हूं, फिर देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो सोचेंगे. That kind of thing. Or take an informed decision at the beginning itself. Because when you are taking an informed decision at the outset, at the beginning itself, then you will not be having any kind of problem at a later point. क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग सिचुएशन बेस्ड अगर डिसीजंस लेंगे तो बाद में दिक्कत. द वेरी फर्स्ट, बिकॉज वी हैव द मराठी क्राउड जनरली विल बी स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. आई होप दैट विल वर्क फॉर एवरीवन. इज इट फाइन? ओके. सो
generally what happens is, once you finish a particular career, once you have completed a particular course, after that it is expected that you should have the job surety in that. आजकल की लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, there is a cut throat competition. बंदा एक दिन कोई गलती करता है, अगले दिन पे फायर हो जाता है. And when this particular thing happens, then we have always to work on the edge. हम लोग ऑफिस जाते हैं तो डर डर के जाते हैं, as the job surety that I will be an asset for the company, and in any ways the given organization is not going to leave me out. That is what you call as the job surety. The second thing, paisa. Aaj, if we are staying in a place called as Pune, agar, for those people who are sitting online, they may be sitting at the multiple places, but those who are sitting in Pune, they know that if we want to live with a family of 4 parents and their 2 kids, if this is the situation, there is a monthly expenditure of no less than 60 to 70,000 rupees. Whether you consider it on the basis of EMI, whether you consider it on the basis of rent, in whichever way you want to, 60 to 70,000 is the monthly expense on a minimum basis. If you are having a proper middle class family lifestyle, that we are having the bit courses which are available in the industry in the current scenario. There are some courses which you can start after your 12th standard, and there are some courses which you can start only after your graduation. Now, as far as the courses after your 12th standard are concerned, there are 4 major options that we have. One, you can start with law. Second, the professional courses, which we also call as the distance learning courses, which include the chartered accountancy, the company secretary, and the cost and management accountant. These are the courses which we can do only after 12th standard itself. It is not like, my lord, meri baat pehle suniye aap. No, nothing of that kind it happens. It is quite different. So, considering that fact, you have to learn it properly, and if you are able to make your point, if you are able to defend your point, then and only then it is expected that you should go for the subject of law. As far as the expenditure of law is concerned, that is around 1.1 to 1.8 lakh, that is around 2 lakh rupees per annum for a course of 5 years. Because after 12th standard, if you are doing law, it is for 5 years, and if you are doing it for 5 years, their annual expenditure on an approximate basis will be 2 lakh rupees. And once you complete that, you need to get associated with some of the law firms which are giving the average package of around 5 to 7 lakh rupees to a good lawyer who is able to make the good points, right? Then the top law schools in India, that is, and jo main keh raha tha ki there is a college in Bangalore, there is a college in Hyderabad, there is a college in Gandhinagar, Pune, ILS is there, Symbiosis is there. The next one is MBA. As I said, MBA or PGDM. Why PGDM? PGDM is Post Graduation Diploma in Management. That is what is called as PGDM. In some colleges, they call that as PGDBM. That is Post Graduation Diploma in Business Management. ये basically जो courses होते हैं, MBA से ही equivalent है PGDM. There are some colleges who are not interested to get affiliated to the local universities. As they are not interested to get affiliated to the local universities, they get affiliated to AICTE, All India Council for Technical Education. And when they get the affiliation from AICTE, in that case, the course that they run is called as PGDM and not MBA. होता equivalent है. फर्क कहाँ होता है कि अगर वो PGDM या PGDBM कोर्स होगा, तो यहाँ उस कोर्स का करिकुलम, उस कोर्स की एग्जाम पैटर्न, ये सारा वो रिस्पेक्टिव कॉलेज डिसाइड करेगा, यूनिवर्सिटी नहीं. They are autonomous colleges. And as these are the autonomous colleges, there is a very limited number of colleges who have got the recognition in the market. Like if you take the example of IIMs, these all IIMs are nothing but the autonomous colleges. They set their own syllabus, they set their own exams, but IIM has got a different level of recognition.
वहां एक बार बंदा एंटर कर गया तो उसके बाद में उसकी लाइफस्टाइल क्या रहेगी हर किसी को पता है, बट वहां तक पहुंचना बाय इटसेल्फ इज अ टास्क. So basically these are the post graduation courses whereby you can do it under the different streams. You can do it in finance, you can do MBA in HR, you can do MBA in marketing. In fact आजकल तो इतना evolve हो गया है MBA. There are some organizations which are doing MBA in medicine management. मतलब अगर आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एंटर करना है तो उसके लिए उनका मैनेजमेंट कैसा होता है उससे रिलेटेड सिर्फ MBA करते हैं. There are some organizations which are conducting MBA in SCM, that is supply chain management. आजकल हम लोग हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं उस ऑनलाइन को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने से ऑर्डर पहुंचने तक की जो चेन होती है उसे हम लोग सप्लाई चेन कहते हैं. तो उस सप्लाई चेन को कैसे मैनेज किया जाए, फॉर दैट ऑल्सो पीपल डू द MBA these days. If you are doing this MBA from the local universities, local institutes, then of course the cost will be lesser, of course the returns will also be lesser. But if you are doing it from the top notch institutes or say top 10 business schools, maybe Symbiosis, maybe Narsi Munji, maybe Jamnalal Bajaj, if these kind of institutes are followed, then in that case the average expenditure for that is for the period of 2 years in the range of approximately 15 to 20 lakh rupees. But if you are completing MBA from there, your average revenue also will be around 6 to 10 lakh rupees per annum to start with. I'm talking about averages, I'm not talking about the higher packages. क्योंकि अगर higher packages के बारे में बात की जाए तो there are the people who are getting crore of rupees also. There are the people who get the amount in the range of say 10 lakh rupees per month as well. But वो डिपेंड करता है कि आप कहां से, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, तब तक आपकी कैपेबिलिटीज कैसे डेवलप हुई है. मतलब बंदे ने कभी ये सोचना गलत है कि यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं. क्यों नहीं कर पाएंगे? If I am developing my capabilities, because what you can put in is your efforts, what you can develop is your capabilities, and what you get as at the end of it is the results of that particular thing, right? Then company secretary, that's again a course which can be started after 12th standard itself. This 12th standard, based on the 12th standard, you can go ahead with your first level, that is called as company secretary level 1. They call it as foundation. Then the next level is called as executive and the third level is called as CS final. 3 levels में course बटा हुआ है. In total you require 3 to 4 years to complete this particular course. Why I said 3 to 4 years? Because there is one additional year to be completed in the form of an internship under a practicing company secretary, right? Again, this is good for those people who like theory papers, who like to have the table work, who like to have the compliances. For them, company secretary is a very good course. कि आपने ना फील्ड वर्क में काम ही नहीं करना है, आपने सब टेबल पे बैठ के ही काम करने हैं. कि इसका ये, जैसे अब कंपनीज के केस में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एज पर द कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट सर्टेन मीटिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. वो मीटिंग्स हुई या नहीं, उन मीटिंग्स का जो रिजल्ट था, जैसे हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, वो हमें सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब ये सारी प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट्स है, ये कंप्लीट करने वाला जो बंदा होता है, दैट इज बेसिकली अ कंपनी सेक्रेटरी. क्योंकि अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है तो उसके लिए पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मीटिंग है, उसमें एजेंडा देना पड़ेगा, वो एजेंडा देने के बाद में उस मीटिंग को कंडक्ट करवाना पड़ेगा, मीटिंग को कंडक्ट करवा के उसके मिनट्स बनाने पड़ेंगे और मिनट्स सबमिट करने पड़ेंगे. दिस ऑल वर्क इज टू बी डन बाय द company secretary. So for that purpose I said, if you are interested to the theory subjects, if you are interested in the compliances and more of the table work, less of the field work, then this is a good course for you. Expenditure wise, compared, as I said earlier, there are 3 levels: foundation level, executive level and final level. That is what they call as professional program. Foundation, which is after 12th standard. Once you crack it, you can go ahead with your executive level.
which has got 9 months and there are 8 papers into that, and professional program has got 9 papers which are divided into 3 different groups. Professional is 1 year, and 1 year internship on completion of your professional course has to be conducted. So in total अगर हम लोग गिने तो 10 plus 2 के बाद में 9, the first 8 months will be required for your foundation. Next 9 months, that is 1 year, 1 year and 1 year, ऐसे अगर कंडक्ट करें, क्योंकि एग्जाम के बाद में रिजल्ट आने तक का इंतजार करना होता है. So therefore 1 year, 1 year and 1 year, total 3 years for completing the course, and 1 year is required for the internship. So total 4 years course after this. However, the company secretary course, on an average, the remuneration, the company secretaries, on an average, the remuneration is somewhere around 5 to 6 lakh rupees, depending on the company to company, because he's basically the compliance officer. So for that purpose, there is the limitation to that also. I'm talking about the starting remunerations only. I'm not talking about the long-term remunerations. The long-term remunerations will of course be dependent upon one's own performance and practices, right? The next one that we are going to talk about is the cost and management accountant. What is a cost and management accountant? Like, take a very simple example. Suppose किसी कंपनी ने मोबाइल बनाया, तो इस मोबाइल को बनाने के लिए उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी, उसकी क्या कॉस्ट थी, उसमें लेबर कितना लगा, उसमें कितना हमने अदर एक्सपेंसेस किए, लाइक मशीनरी का यूसेज, इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज, ये सारी चीजें कंसीडर करके उसका टोटल कॉस्ट कितना बना, ये असर्टेन और डिसाइड करने वाला जो बंदा होता है प्रोफेशनली, that is nothing but a cost and management accountant. Same ways we can decide the cost for the services also. But क्या उसका काम सिर्फ cost calculation है? No. The person is going to give you the suggestions on cost reductions, cost re-engineering, cost audits. These all kind of functions are carried out by the cost and management accountant, because he is not only focusing on costing but is also focusing on management. And therefore he is called as a CMA or cost and management accountant. Now the cost and management accountant, as the course of CS was there, even at the CMA there are the levels as foundation, executive and final, everything after 12th standard. 3 stages: CA foundation, CA intermediate and CMA foundation, CMA intermediate and CMA final. Students who have passed 10 plus 2 can appear for the CMA course. After the foundation course you can carry over the further progress. अब generally अगर मुझसे कोई consultancy के लिए आता है to ask for specifically the professional courses, generally I tell the person, if you are corely interested into the costing and mining, cost engineering, then and only then you should go for this particular course, because comparatively the scope for this course is limited. Why? Because there are very limited number of industries, there are very limited number of service industries which will be requiring this kind of service, and that's why, as the scope is limited, only if the person is having the clear cut indication and idea of doing this particular course, or already the background is there, then and only then the person should pursue this particular course. क्योंकि बात होती है डिमांड सप्लाई की, मार्केट में डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है. क्योंकि मुझे और कोई कोर्स नहीं आ रहा है इसलिए मैं सीएमए कर लेता हूं, शुड नॉट बी द केस. क्योंकि ये कोर्स ऐसा भी नहीं है कि कर लेता हूं और हो जाएगा. यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट? Let me come to the introduction of CA course. I'll be going in a more details of this because that's where we have the expertise on, we focus on, and that's why I'm going in more details of that CA course. Probably some of you have already come ahead with the intention of understanding more details of the CA course. That's why I'm going to, but at the same time I won't say that this is the only course available in commerce. That's why we started talking about the CS, law, MBA, CMA, and then I'm coming to the CA course. Why? Understand, friends, that there is a situation, if you observe the current market, like all those parents who are sitting in here, all those parents who are sitting online, they must be knowing this, that if it is related to finance, if it is related to taxation,
if it is related to audits, if it is related to taking a decision related to the long-term financial impacts, the very first thing that we have in our mind is let's consult our chartered accountant. Why? There are the other professions available. Still, why we are interested to connect to our chartered accountant is we believe that this person who is a chartered accountant is being trained on the basic financial requirements. He understands how to take a reasonable, logical financial decision. He will not try to give me a biased decision. He will be trying to give me a more practical thought with that particular decision. And if this is the case, then why not to pursue that as a career as well? That's the first thing. Second, अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो विद इन द कॉमर्स फील्ड द मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशनल इन द करंट सिनेरियो ओवर एंड अबव MBAs as well is the chartered accountant. Why? Because MBA का अगर एग्जाम्पल लिया जाए या लॉ का एग्जाम्पल लिया जाए तो there is an ample amount of supply of lawyers and MBAs in the market or not? हर साल अगर हमारे देश में सिर्फ 1000 MBA इंस्टीट्यूट्स है, ज्यादा की बात नहीं करूंगा क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो पुणे अलोन हैज गॉट 200 इंस्टीट्यूट्स कंडक्टिंग MBA, पुणे अलोन. But if I take good institutes, and those good institutes in our whole country is 1000, then अगर एक इंस्टीट्यूट का भी इनटेक या आउटफ्लो इज ओनली 120 स्टूडेंट्स पर एनम, ओनली 120 एक इंस्टीट्यूट का, मतलब देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ 1,20,000 MBAs every year. 1,20,000 every year. Whereas if you take the example of chartered accountants, recently the ICAI declared the results. In total, in a year, there is no more output of more than 10,000 chartered accountants in a year. That too is the larger number in the current scenario. Looking at the demand, the number of chartered accountants being completing their course has increased, but earlier it was not the case. क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे हमारे पूरे देश में 1949 में CA इंस्टीट्यूट बनी थी. 1949 से आज तक we are in 2022, there are only 3,50,000 chartered accountants. 1949 से आज तक we are talking about the story of 73 years, and in 73 years there have been only 3,50,000 chartered accountants. Average अगर गिना जाए तो 5,000 per annum, and ये भी of late the numbers have increased because there is more input, more and more people are interested to do this course. That's why there are more and more people becoming chartered accountant. इंक्लिनेशन बढ़ा हुआ है कॉमर्स की तरफ, इसलिए. व्हाट CAs कैन डू इन प्रैक्टिस? लाइक CA एक प्रैक्टिस भी कर सकता है और जॉब में भी जा सकता है, जो हम लोग पहले जॉब ऑप्शंस की बात कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे थे. सो देयर इज एन ऑप्शन. आई कैन स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस. नहीं यार, मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना, मैं खुद का काम खुद करेगा. और आई कैन वर्क with someone else. So both the options are available. If I am doing a practice, I can carry out the audits. Every business who is carrying out the activities beyond 2 crore का turnover are required to get the books of accounts audited as per income tax rules. कोई भी अगर कंपनी होती है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप बिजनेस करो या नहीं करो तो भी ऑडिट करवाना ही पड़ता है. So that's auditing service. Then tax services, whereby the chartered accountant is trying to train you on tax planning. The chartered accountant will never tell you that you should pay lesser taxes. The chartered accountant will tell you you can pay the lesser tax if you carry out this activity. तुम्हारी इनकम 10 लाख है, मैं 5 लाख रुपए इनकम दिखा के तुम्हारा टैक्स बचा देता हूं, ऐसा जनरली वो नहीं करता.
चार्ट अकाउंटेंट व्हाट ही विल डू कि तुम्हारी इनकम 10 लाख की है, पर अगर तुमने ये इन्वेस्टमेंट की तो तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा. So chartered accountant will always tell you how to plan your taxes. Financial services, like there are the situations where you want to invest in some good things. तुमने नया business start करना है. If that is the case, for that purpose the chartered accountants can be of huge help, because they will be taking the financial calculations and then will be giving you the suggestions. And then the other services in the form of business valuations, the accounting process, etc. What CS can do in service? They can be the executives, they can carry out the activities like me. I am a faculty, I am not doing practice, I am just coming here, taking the lectures and leaving. Then see, as the entrepreneur, there are so many people who are carrying out the businesses. हमारा स्टूडेंट है, हमारे एक नहीं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CA कंप्लीट किया, and after completing CA they are not interested to do the practice, they are not interested to do the service, they are carrying out their own business. One of my friend who completed CA along with me, now he has left his practice and he is carrying out his own business. He has got a mall of 7,000 square feet and he runs that mall. क्यों? तो मेरे को अब बिजनेस करना है. और हमने जो ट्रेनिंग पाई है इन द प्रोसेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, उस ट्रेनिंग के थ्रू वी कैन श्योरली लर्न हाउ टू अप्लाई द मनी, हाउ टू मैनेज द थिंग्स. द लीगल फ्रंट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, द टैक्सेशन फ्रंट we are already aware of, and when we are aware of each and every activity we can carry out the business in a better way or not. So chartered accountants can surely be the running their own businesses, they can be the directors. Now this statistics is very much important, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है. क्यों? डेवलप कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें ना, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहां आप ऑब्जर्व करो, यूएस में लगभग 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं बिहाइंड द पॉपुलेशन ऑफ एवरी 10,000. 15 वहां सीपीए बोलते हैं लोग, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. यूके में द नंबर इज 21, न्यूजीलैंड इट इज 68, ऑस्ट्रेलिया इट इज 18, and in India, looking at our population, we have got only 2 chartered accountants behind every 10,000 population. फिर बंदा मन ही मन बोलता है यार 10,000 में से आधे तो बच्चे और बूढ़े होंगे जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं है. इग्नोर करो, चलो ठीक है, 50% डिलीटेड, स्टिल 5,000 रिमेनिंग. सर उसमें से तो करीब 20% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनका तो इनकम ही नहीं होगा, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर टैक्सेशन एटसेट्रा की जरूरत पड़ेगी. डिलीट करो, 20% गए, स्टिल देयर आर 4,000. बिहाइंड 4,000 पॉपुलेशन हु रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर आर हाउ मेनी? ओनली 2. सो बट ऑब्वियस सी चीज है कि दिस इज द केस, देन there is a huge demand in the market or not. लोग सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. There are so many things in the market. हर बंदे को ना सीए के पास थोड़ी जाना पड़ता है. Of course हर बंदे को सीए के पास नहीं जाना पड़ता है, बट वो जिस बंदे के पास जाएगा वो बंदा तो सीए के पास जाएगा ही नहीं. बिकॉज आजकल सर, आजकल तो टैक्स पर रिटर्न भरने के लिए हमको सीए के पास जाने की जरूरत ही नहीं है. देयर आर द वेबसाइट्स अवेलेबल. व्हाई विल गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट? वो वेबसाइट बनाने वाला भी तो सीए ही रहेगा ना, या वेबसाइट में सपोर्ट करने वाला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहेगा ना. तो इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. एंड माइंड वेल, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इन आवर इकोनॉमी, द काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज कमिंग इन आवर इकोनॉमी, the kind of numbers which are growing every day, मतलब ये कि हम लोग शायद 10 साल पहले, पेरेंट्स विल वाउच ऑन दिस, शायद 10 साल पहले हमारे दिमाग में कभी नहीं आता था कि दैट विल बी स्पेंडिंग ऑन मे बी से मेडिसिन और मे बी से ऑन आवर ग्रोसरी टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट वी आर स्पेंडिंग टुडे. ये क्यों बढ़ी? ऑफ कोर्स द डिमांड सप्लाई रेशियो इज देयर, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी भी तो ग्रो हो रही है ना.
Do not look at it from the perspective of consumer, look at it from the perspective of the businessman. और अगर आप बिजनेस एंगल से सोचना चालू करो तो यू रियलाइज कि जो इकोनॉमी, जो बिजनेसमैन 15 साल पहले, 10 साल पहले 50 लाख का टर्नओवर करता था, आज वही बिजनेस 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है. बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द डिमांड्स. हम लोगों को स्विगी, जोमैटो, ये सारी चीजें पता भी नहीं थी. बट टुडेज सप्लाई चेन हैज ब्रॉट दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स इन द मार्केट और नॉट. So new and newer kind of business concepts are coming into the market. New and newer startups are coming who are having the different business ideas. और इन सब के लिए आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी. एंड एट दैट टाइम हु कैन बी ऑफ हेल्प इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. In that case, you may be requiring company secretary only if you are forming that as a company. You may be requiring a cost and management accountant if you are not getting the correct financial consultancy from the chartered accountant. And that's why there is a demand requirement. आप अगर सच में मार्केट अगर एनालाइज करो प्रॉपर, जो मैं आपको पहले 5 पॉइंट्स बता रहा था उसके हिसाब से अगर आप एनालाइज करो तो you realize yes, there is a requirement of chartered accountant and we can surely make money out of that. Whereas in chartered accountancy course there are primarily 3 levels at present. That is CA foundation, after 12th standard we are talking about, CA intermediate and CA final. In fact इस पॉइंट पे आप लोगों ने अगर सपोज थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा, अगर आपने रिसर्च किया रहेगा, तो यू मे बी नोइंग that there is some changes which are expected to occur in the CA curriculum. Levels are going to remain same. Change कहां होने वाला है? There are some subjects which are changing. There are some articleship period which is currently 3 years which is going to get converted to 2 years. That is the major change happening. Otherwise, the course levels and structure as a broad concept is going to remain same. That is, we are going to have CA foundation, we are going to have CA intermediate and we are going to have CA final as well. फिर भी जब मैं आगे की बात करूंगा तो in that I will give you the comparison. क्या current scenario है और क्या expected scenario है. क्यों मैं इस पे concrete बात नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि इसका कोई announcement officially अब तक के आया नहीं है. Currently, the new structure is only being brought by the ICAI and is available for the public comments. और जब तक उस पे पब्लिक कमेंट्स नहीं आ जाती हैं तब तक वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर न्यू प्रोसेस. ऑलराइट, आई जस्ट ट्राई टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू. अभी का सिनेरियो जो है वो बात करूंगा और साथ ही आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू सिनेरियो. राइट, अभी का सिनेरियो कुछ ऐसा है. The current scenario is something like this. 12th standard, now you people as are in 10th standard. At 11th standard, we do not talk about the foundation, but we create your fundamentals. We create your foundations from the perspective of any professional course that you want to pursue. We do not think कि आप अगर एकत्वम एकेडमी में आ रहे हो फॉर योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मतलब आप मैंडेटरीली सीए ही करोगे. बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ओनली फॉर द सीए कोर्स, बट वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स एज वेल एज द सीए कोर्स. So when we are, that's why we have the classes for 11th and 12th standard going separately and the CA course studies classes are going separately. When we are talking about something at 11th and 12th standard, at that time we talk from the core concept point of view. ताकि आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स बाद में कर लो तो यू विल बी एबल टू परस्यू इट. You will not be taught the 11th and 12th standard course curriculum from the perspective कि just ठीक है यार कंप्लीट कर लो, एग्जाम में मार्क्स आ गए, बात खत्म. We are least interested to only get the marks into the examination, क्योंकि अगर मेरे concepts, मेरे fundamental strong है तो मुझे एग्जाम में तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे.
We believe in this particular thought. We never have a kind of thought कि तुमने अगर मेहनत की, तुमने अगर सिर्फ एग्जाम में जो आने वाला है वही पढ़ा तो ही तुमको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं. हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा अलग है. हम कहते यही है कि अगर आप ठीक से पढ़ाई करते रहोगे, अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ाई करते रहोगे तो आपको तो हमेशा मार्क्स मिलने हैं, राइट? So these students who are currently completing their 10th standard and going in 11th standard, for them 12th exam will be coming in March of 2024, correct? Because now you have completed your 10th standard, next year you will be completing your 11th standard, and therefore in February or March of 2024 you will be having your 12th exam getting over, right? Now what we have devised, what we have planned, if you are doing the CA curriculum along with your 12th standard, if you want to pursue it, we suggest that you should pursue it along with your 12th exam. So what we have done, from July 2022 to March 2023 will be focusing only on 11th standard subjects. We are not going to talk about anything other than 11th standard subjects when it comes to the first year. From April 2023 to January of 2024, we carry out our we carry out the activities whereby we are carrying out 12th standard plus CA foundation, if at all the person is following CA also. If not, then only 12th standard classes will be conducted independently. It is not the case कि 12th के साथ साथ हम लोग CA foundation के भी टॉपिक पढ़ा देंगे क्योंकि टॉपिक सेम है, because the requirement at CA foundation and the requirement at 12th standard are quite different. Kaka, just a moment. ये थे एक मिनट हम एक मिनट बस सुन दे. हाँ, so we conduct our classes for 12th standard and CA foundation together, but at the separate timings. We have made the timetable in such a way that it will be covered both together. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, February 24 to March 24 they'll be focusing only on their 12th standard, and then from March 2024, क्योंकि मार्च मिड में ही लगभग इनकी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हो जाती है, तो March 24 to May of 2024 they'll be focusing only on foundation. Now this foundation exam has primarily got 4 papers. Which 4 papers? There is a paper of accounts for 100 marks. There is a paper of law for 60 marks and BCR, business correspondence and reporting, for 40 marks. However, in the new curriculum which is expected to be implemented till the time you people start with your exams for CA foundation, this paper of law and BCR is going to get converted into only law for 100 marks. I am talking about current and upcoming. Current was law 60, BCR 40, but upcoming is law 100.
which we expect that will surely be implemented. That's why I'm talking from that perspective. All right. Then there will be the subject of maths, which is for 100 marks. Currently, there is a subject of economics for 60 marks, and there is a subject called as business commercial knowledge for 40 marks. But in the upcoming schedule, in the upcoming structure, this business commercial knowledge paper is going to get deleted. And instead of that, economics will become of 100 marks. तो अब तक की जो कहानी है वो क्या है? There are 6 subjects, but 4 papers. But in the upcoming story, what is going to happen? There will be 4 subjects and there will be 4 papers. Of course, with the changed syllabus and structure, that syllabus and structure will surely be mentioned when you are going to start with that. At foundation level, these two papers are descriptive in nature, and the further 2 papers are MCQ based, whereby ये पेपर्स 100 मार्क के लिए जो रहने वाले हैं वहां पे आपको पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पेपर आने वाला है, एंड यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली. एंड फर्दर जो 2 पेपर्स हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स, दीज पेपर्स विल बी एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स. दीज 4 पेपर्स विल बी कंडक्टेड ऑन इंडिपेंडेंट डेट्स. अलग अलग दिन पे इनकी एग्जाम्स होती हैं. अल्टरनेटिव डे का हॉलीडे होता है, एंड यू आर गिविंग द एग्जाम्स ऑन द अल्टरनेटिव डेट्स. Here, if you are giving the correct answer in the MCQ based papers, if you are giving the correct answer, you get +1. If you give a wrong answer, you get -0.25 for that. And if you are giving a blank answer, then it is considered as 0 marks. So there is no negative marking when it comes to the descriptive papers. वहाँ जो आप लिखोगे, जैसा लिखोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे. But for the MCQ based papers, of course, there will be the negative marking. The passing criteria in the current scenario is you have to get 40% per paper and 50% in aggregate. But the new criteria which is expected to come is 50% per paper. That's it. पर ये सिर्फ फाउंडेशन लेवल के लिए अप्लाई होगा, अगले लेवल्स के लिए नहीं. फाउंडेशन लेवल पे द पासिंग क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी व्हाट? 50% पर पेपर. हर पेपर में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. सर फिर हमारा अगर अकाउंट्स और लॉ क्लियर हो गया एंड कुड नॉट क्रैक सपोज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, सपोज, देन नेक्स्ट टाइम विल वी बी रिक्वायर्ड टू गिव ओनली मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स? आंसर इज नो. यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल कोर्स. हियर if you are not able to crack even in a single paper in the next exam, you will be required to give all the papers again. That's what is the rule for these professional courses, right? Once you crack your CA foundation, the result of which will be coming in July of 2024, CA foundation results, assuming we have passed it, right? जो of course हमने ऐसे ही सोचना चाहिए ना. हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं ना कि हमने एग्जाम दी और अगर फेल हो गए तो? अगर कैसे फेल होंगे? हमने एग्जाम दी, हम तो पास ही होने वाले, है ना? जैसे वो हम लोग घर में बताते हैं 10th है, तो जैसे पेपर दे के आया फैंटास्टिक, एकदम 100 में से कम 100 मिलेंगे. उससे ज्यादा क्या मिल सकते थे भाई? कम से कम 100 मिलेंगे, यही कॉन्फिडन्स दिखाते थे नाही. आणि मग रिझल्ट येतं, आणि जेव्हा रिझल्ट आला तेव्हा 88%. अरे का रे राजा, तू 100 म्हणला होतास, 12 कुठे गेले? त्यांनी पेपर बरोबर चेक केले नाहीत. The institutes have done, no, examiners have done the strict checking, or we have the kind of thought कि नहीं वो पेपर क्वेश्चन बराबर नहीं था, there was a wrong question, and we go defensive at that time, you know. It happens, ठीक है, that's a normal human tendency. कि इसीलिए पहले टशन नहीं दिखाने का, पहले जमीन पे रहने का. नाही बरं होतं, ठीक आहे, गेलं ना आता काय, आता एन्जॉय करू देत की 10वी नंतर, न केलं की नाही एन्जॉय? 2 महिने खूप एन्जॉय केलं सर. हे घरच्यांनी काही सांगितलंच नाही तुझ्या हातात दिवसभर मोबाईल असतं म्हणून. 10वीत तर असायचंच. 10th देयर वॉज नो ऑप्शन, यू नो. इन 10th स्टैंडर्ड पेरेंट्स ऑल्सो हैड नो ऑप्शन. पहले हम लोग कभी भी अगर पढ़ाई करनी होती थी, हम लोग के हाथ में अगर बुक नहीं है तो हमारे पेरेंट्स चिल्ला देते थे, यार तेरा 10th है और तेरे हाथ में बुक नहीं है. आजकल तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं है तो पेरेंट्स चिल्ला रहे थे, यार तेरा 10th चल रहा है, तेरे हाथ में मोबाइल नहीं है.
So good it was, the lockdown period. But suddenly the things have changed. We have to come to the offline classes. यहाँ टीचर की नज़रें हम पर होती हैं, यहाँ ये ध्यान से देखते हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर पहले वाले दिन अच्छे थे सर, है ना? सच में अच्छा था ना ऑनलाइन। तो 7 बजे का लेक्चर 7:05 को उठ के बैठो, और फिर बीच में ही ब्रेक में मम्मी नाश्ता दे, है ना? कंबल ओढ़ के जो हम लोग क्लास अटेंड किया करते थे। ओ माय गॉड। No, even I have seen my son was there in 10th and 11th standard in the lockdown period. He is in the 12th standard now. He is pursuing the CA course. तो उसको देखता हूँ ना, वो जो 2 साल पहले वाला था और अब वाला जो था है, उसमें बहुत फर्क है। बेचारा बड़ा परेशान होता है, दिन भर फ्रस्ट्रेटेड होता है कि चल क्या रहा है यार मेरी लाइफ में। मतलब सुबह 7 का क्लास होता है, बेचारा सुबह 5:15 बजे उठता है, क्योंकि रेडी होके बस में उसको यहाँ तक क्या आना होता है। देयर इज नो फैसिलिटी अवेलेबल टू हिम कि उसको खुद बस मैनेज करके ही हैज़ टू कम हियर। तो वो उसको पता है कि 6 बजे की बस पकड़नी है तो 5:15 बजे घर पे उठना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं पहुंच पाएगा। सो ही थिंक्स यार 7 बजे की क्लास के लिए मैं 7:05 को उठता था, और अब 7 की क्लास के लिए मेरे को सुबह 5:15 बजे उठना पड़ता है, रेडी होके यहाँ पहुंचना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे उठे वैसे बैठे, वैसा तो हो ही नहीं सकता, रेडी होके आना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं, है ना? और एक अलग ही फीचर हो जाता है ना, अगर हम लोग ठीक ठाक नहीं दिखेंगे तो लोगों की नजरों में कैसे आएंगे, हमारी कहानी कैसे बनेगी? नहीं नहीं ना, कहानी नहीं बनाना है। हाँ, वेल sir will be giving all the answers at a later point, the fees etc. We'll be talking about the expenditure as well. वो क्या हो रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मतलब लोग मुझे छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रियलिटीज ऑल्सो, द फैक्ट्स। और यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स भी एकदम से रिलेट कर गए, सर यही लाइफ थी सर, वही कोई मुझे उस लाइफ के पास वापस पहुंचा दो यार, है ना? कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है, कशाला इतकं लांब यायचं? फ्रॉम वेयर हैव यू कम, विच प्लेस? चिंचवड, मुकुंद नगर, आंबेगांव, बाप रे, नांदेड़ सिटी, सदाशिव पेट। तो तुमने तो वहां पे लेक्चर अटेंड किया था ना मेरा? हाँ हाँ वही। सो एनी विच वेज, तो दीज स्टूडेंट मतलब पेरेंट्स तो आज लेके आए चिंचवड़ से यहाँ तक, आंबेगांव से यहाँ तक। पेरेंट्स भी अभी जाते जाते सोचेंगे बेटा तू रोज कैसे पहुंचेगा, तो आज तो ठीक है हमने पहुंचा दिया, पर तेरे को रोज कैसे पहुंचना है? एनीवेज, so CA foundation results are expected to come in the July of 2024. Then the next level that will start is CA intermediate. As far as the further levels are concerned, I'm not going to go into the details of that. There will be probably in the times to come, there will be 6 papers and 2 groups. Currently there are 8 papers and 2 groups. पहले 8 पेपर हुआ करते थे, 2 ग्रुप्स है। अब आगे जाके जो बदल होने वाला है, जो चेंज आने वाला है, उसके हिसाब से देयर विल बी 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड only 2 groups, that is 3 papers each group will be the situation. Passing criteria at CA intermediate is 40% per paper. यहां 50% पर पेपर वाला क्राइटेरिया नहीं है, पर the aggregate should be 50%. 50% in aggregate. That is the criteria at CA intermediate level. मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज भी पास करना है और उसका टोटल भी 50% और अबव होना चाहिए. Then this CA intermediate exam for the person will be coming in May of 2025, and the result of that is expected again in July of 2025. यहां से the student will be required to do as per the new structure. Current structure के हिसाब से 3 साल के लिए articleship, but as per the new structure the student will be required to do the articleship only for 2 years, which is now the change happening. So August of 2027 the person's articleship will get completed.
क्योंकि जुलाई 2025 में अगर हम लोग इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं तो अगस्त में लगभग हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, तो अगस्त 2025 टू अगस्त 2026 टू अगस्त 2027, एंड after this the person pursues the CA final, for which he'll be required to give the exam in May of 2028, or there can also be a situation where we are allowed to give the exam in November of 2027. We may be इसके लिए अभी तक के पूरा क्लैरिटी नहीं दिया गया है. Once the clarity comes, after that we decide. We will be talking about this, that it will be November 27 or May 2028. That depends on the situation. And then once that November 27 or May 28, the targeted result will be January of 28 or July of 2028, when the person will be called as what? The chartered accountant. Based on the clarification, the last point is remaining. Otherwise, as per my interpretation, what I have read, according to my understanding, it is July of 2028 when the student will be able to complete the CA course. So if we consider it like that, आज हम लोग 10th standard complete करके बैठे हैं in the year 2022. आज के बाद 6 साल, if we are clearing everything in the first attempt, the person will be completing the whole of the CA course. Now the question arises, what are the खर्चास and the remunerations? क्योंकि जैसे हमने बाकी कोर्सेज के बारे में बात की कि वहां पे खर्च कितना आता है, वहां पे जनरल रेम्यूनरेशन क्या मिलता है, वैसे ही यहां भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो सीए फाउंडेशन ऑन एन एवरेज, हम लोग अगर सीए करिकुलम की बात करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 11th 12th का मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, राइट. सीए फाउंडेशन का करंटली वी आर चार्जिंग द फीस ऑफ अराउंड 65,000 इंक्लूडिंग द जीएसटी, राइट. करंटली by the time your children, your students come into the class, the things may change. Then there is the CA course registration that is to be done with the Institute of Chartered Accountants of India, that is for around 10,000 rupees. In fact, 9,200 is the fees. I'm just rounding it off. Then there are exam fees to be paid for the CA foundation course, that is 1,500 rupees. And if we are buying some books or something like that, for that there will be the expenditure of around say 3,500 rupees. So in total there is an expenditure of 80,000 at CA foundation level. For CA intermediate, the same expenditure all put together goes to somewhere around, that goes to somewhere around 1,25,000. And at CA final level also, all put together goes to somewhere around 1,25,000. So the total expenditure that we are going to incur in this whole course is 3,30,000. I am not including the hostel fees into this. If at all there are some outstation students sitting in here, I am not considering the hostel fees. That depends on one's own lifestyle, right? 3,30,000, but at the same time one hinge is there, and that is what? You are going to do articleship, and when you do articleship, at that time you get the stipend. In Pune, the current stipend is somewhere around 5,000 rupees per month, which is of course expected to rise in the times to come. If I consider first year stipend as say 7,500 rupees per month, probably I am not committing on this, but this is bound to happen. आज की तारीख में जिस तरह का सिनेरियो है वो कंसिडर करके मैं बात कर रहा हूं. 7,500 for 12 months, that is somewhere around 90,000, and the next year say 10,000 rupees per month for 12 months, that goes to 1,20,000. In all, the expenditure comes to 1,20,000 net expenditure. If I subtract the stipend out of that, that goes to somewhere around 30,000 rupees per year ka expenditure,
we know the current date school fees that we are paying is somewhere no less than 60 to 70,000 rupees per annum. And for a professional course, we can complete it at 30,000 rupees per annum. That is quite reasonable a cost, which I can understand. Recently, when 𝐼CAI conducted the campus interview, what is that campus interview? This is what we were talking about. What is that campus interview? is ये मैंने इसलिए प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने 3 years के लिए कंसिडरेशन रखा था आर्टिकलशिप का. अब 2 years के लिए होने वाला है, तो I considered only for those 2 years. The current pay package which the chartered accountants have got in the recent campus interviews is somewhere around 10 to 15 lakh rupees. On an average, it was 10 lakh rupees as the remuneration that the chartered accountants have got. One of our students got the remuneration of 35 lakh rupees. He is a fresh chartered accountant, age 22 years. And that person has been offered the remuneration of 35 lakh rupees. And like this, there are so many examples. I will not go into that because it all depends on one's own capacities. But on an average, अगर हम लोग CA बन जाते हैं और हम लोग अगर कैंपस इंटरव्यू में जाते हैं, and if we are able to present well, मैं कितना स्मार्ट हूं कितना वीक हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कितना प्रेजेंटेबल हूं इससे बहुत फर्क पड़ता है. और जब मैं प्रेजेंटेबल हूं और मेरे पास कंटेंट है, तो 10 से 12 लाख रुपए, that is 1 lakh rupees per month, is reasonable enough. I started talking about कि in Pune city, if we are surviving at 50 to 60,000 rupees currently, in the times to come, if we are getting 1 lakh rupees per annum, I think that will be reasonable enough. I am talking about a family of 4. So, और अगर उसमें अगर डबल इंजन लग जाती है, if husband and wife both are earning, of course, without that we cannot survive in the current scenario, then at least we'll be able to have the enjoyments, we can complete our ambitions. So for that purpose, this course may be a reasonable course. एक बात जो बहुत सारे लोग बात करते हैं, हम लोग कहीं पे भी जाके चर्चा करते हैं ना, हम लोग कहीं पे भी जाके डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग कई बार सुनते हैं यार CA कोर्स सिर्फ 2% रिजल्ट होता है. ये बहुत बड़ा झूठ है. क्यों? इसीलिए हमने ये इनपुट आउटपुट रेशियो रखा हुआ है यहाँ पे. जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर 100 लोग CA कर रहे हैं तो फाउंडेशन का एवरेज रिजल्ट होता है 40%. मतलब 40 लोग इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, 40 लोग अगर CA इंटरमीडिएट दे रहे हैं तो CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट है 25%. मतलब 25 लोग पास हो रहे हैं, सॉरी 10 लोग CA फाइनल में जा रहे हैं, नॉट 25. और अगर फाइनल का रिजल्ट लेट्स से 20% है, ये जो परसेंटेज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दीज आर एवरेज परसेंटेजेस बेस्ड ऑन द पास्ट सम एग्जाम्स. पास्ट जितनी भी एग्जाम्स ICAI ने कंडक्ट किए हैं फॉर लास्ट से 4 और 5 ईयर्स, उसका एवरेज परसेंटेज जो है वो ये है. तो 2 लोग CA बन रहे हैं. बंदा सही कह रहा है यार, 100 लोग बैठे थे, 2 लोग CA बने, मतलब ओनली 2% इज द रिजल्ट. Why this is fake? Why this is a myth? Why this is wrong? Understand and observe. If suppose 100 of the students are sitting for the CA foundation course, 40% of course are passing, that means 40 people are going ahead. Does not mean that the remaining 60 have left the course. We are talking about a professional course. ये कोई हमारा 10th और 11th standard तो है नहीं कि पास नहीं होंगे तो छोड़ देंगे. Professional course, people pursue it, people follow it. So if out of that 60-40% pass, that is 24, still 36 remaining. I consider only up till second attempt. मेरे हिसाब से actually जो second attempt दे रहा है, first attempt में fail हुआ, second attempt दिया, second attempt में भी पास नहीं हुआ, बंदे ने छोड़ देना चाहिए. ये मेरा thought है, personal opinion है. बट कई सारे पेरेंट्स आते हैं, सर आप हमारे बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, पिछली बार पढ़ाई नहीं हुई होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा. चलो ठीक है, हम लोग अज्यूम करते हैं 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे रहा है. सेकंड अटेम्प्ट उसने वापस से दी, थर्ड अटेम्प्ट, और उसमें से अगर 40% लोग पास हुए, विच इज द परसेंटेज विच आई एम कंसिडरिंग एज यूजुअल, क्योंकि बंदा जब सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा उस टाइम तक तो उसकी रिवीजन ज्यादा हो जाएगी ना, ऑफकोर्स उसका पासिंग का लेवल बढ़ जाता है, पर फिर भी हम लोग अज्यूम करते हैं वही परसेंटेज कंटिन्यू हुआ 40%. तो इसका मतलब इसमें से भी 16 लोग पास हो गए. So the people who are going in CA intermediate is not 40, in fact those are 80. और अगर ये 80 लोग CA इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, उसमें से 25% लोग पास होते हैं, तो मतलब 20 लोग CA फाइनल में गए. और इसमें से भी अगर 60 रह जाते हैं, तो ये 60 वापस अगर 25% पास होते हैं तो 15 आगे बढ़ते हैं. इस पे जो बचे हुए
45 है, 45, उसमें से अगर 25% लोग आगे जा रहे हैं, so that is somewhere around 11 going ahead. So in total 46 are going in CA final and not 10. और CA फाइनल में आने के बाद बंदे का जुनून अलग होता है, क्योंकि उसको पता होता है मैं ये एग्जाम पास हो जाऊंगा तो CA बन जाऊंगा. तो अगर ये 46 में, फिर भी हम लोग 2 ही अटेम्प्ट तक के कंसीडर करेंगे, वी विल नॉट कंसीडर बियॉन्ड दैट. अगर 46 आर गोइंग अहेड एंड इफ वी कंसीडर ओनली 20% एज द रिजल्ट, मतलब 9 लोग CA बन गए in the first attempt itself. And out of that 46, 9 have passed, 37 still remaining. If those 37 are giving the exam, 20% are passing, that means 7 are becoming CA. If I consider only up till third attempt, I'm not going beyond that. CA कोर्स में, CA फाइनल में मैंने कई सारे बंदे देखे हुए, नहीं हो रहा है, एक ग्रुप करके पास करेगा, फिर अगला ग्रुप पास करेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, बट CA तो बन के आऊंगा ना. क्योंकि जब वो CA नाम लग जाता है ना, तब कहानी बदल जाती है. एंड if 30 are remaining, out of that 20% are passing, that is 6, 9 plus 7, 16 plus 6, 22. That means out of 100, it's not only 2, but 22 are becoming CA on a hypothetical basis. That means the result is 22% and not 2%. ये मैं deliberately, जिस किसी भी, जहां कहीं भी मैं अगर सेमिनार ले रहा होता हूं, मैं हर जगह ये जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये CA कोर्स को बदनाम किया जाता है. हम लोग हमारे फ्रेंड रिलेटिव किसी के साथ भी बात करें, इमीडिएटली पहला इंटरप्रिटेशन CA कोर्स कशाला, अरे 2% रिजल्ट है त्याचा. दिस इज हाउ पीपल ट्राई टू डोमिनेट और पीपल ट्राई टू से, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैंने खुद सुना हुआ है जब मैंने CA कोर्स ज्वाइन किया था. कई सारे लोग कहते हैं सर हमको एवरेज परसेंटेज मिलते हैं, कैन वी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. For your kind information, I got 63% in my 12th standard and I am a chartered accountant for last 20 years now. And there are the students who are coming to me and they are also becoming chartered accountant. मतलब कुछ तो content होगा ना. So it's not what percentage you get is deciding what you should do. It's your intent that decides what you should do or how you can go ahead. The other courses which are available, these are the internationally acclaimed courses. That is, actuaries is one of the course. If your interest is core maths, statistics, then you should pursue actuaries. Otherwise, you should not. क्योंकि ये कोर्स बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड सेक्टर में जो एनालिस्ट होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है. They of course get the good remuneration, but at the same time there are very limited number of people because there is only a single institute which is conducting this whole thing and they have very limited scope. By that way, certified financial analyst and certified financial planner, again very important and internationally acclaimed courses. If we are doing CA and later on we do CFA as well, this combination is deadly, serious combination. If there is a person who is a chartered accountant as well as CFA, that person gets the remuneration of no less than 50 lakh rupees per annum. Industry में इतना requirement है, क्योंकि that person is having the core knowledge of accountancy, law and taxation, being a chartered accountant. And now completing CFA, he gets the detailed knowledge of financial management and the financial markets as well. इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये बंदा डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में काम कर सकता है. And that's why that particular thing commands the demand in the market. CFA and CFP basically works for the individual planning. ये हमारे देश में थोड़ा कम प्रचलित है. अगर आप US, UK जैसी कंट्रीज में चले जाओ तो वहां पे CFPs आर इन ह्यूज डिमांड, बिकॉज हमारे देश में मैं कितना कमाता हूं मैं किसी को नहीं बताता हूं. कोई भी पूछता है ना भाई कितना, पर रोटी दाल बन जाती है, हफ्ते में एक आध दिन चिकन खा लेते हैं. दिस इज द नॉर्मल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी गिव. बट when it comes to the US or UK kind of countries, there these professionals ask you what is your income and they plan कि तुमने तुम्हारा इनकम कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तुमने ये पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं. That is certified financial planner. They give the detailed planning on how you should be making the assets, how you should be spending your money, etc., etc. So that's why those are the internationally acclaimed courses. Personality traits very important. क्योंकि हम लोग सोच तो लेते नहीं यार हमने सीए करना है या हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है. किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करने के लिए वन इज एक्सपेक्टेड टू हैव सम बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स. एज टू व्हाट? नंबर वन, आई शुड बी हैविंग एनालिटिकल माइंड. हैविंग इन अ सेंस पहले से होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट डेवलप तो किया जा सकता है ना. यू शुड बी एबल टू एनालाइज द थिंग्स, you should be able to apply your brain
मतलब मैं मेरे बेटे के साथ कई बार बात करता हूँ, कोई एडवर्टीजमेंट आती है, वो एडवर्टीजमेंट को इमिटेट करने की कोशिश करता है, मैं उसको बोलता हूँ तो एडवर्टीजमेंट को इमिटेट करने के बजाय ये सोच कि ये एडवर्टाइजमेंट से उस कंपनी को क्या फायदा होगा, हाउ दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर रेवेन्यू, हाउ मच एक्सपेंडिचर दैट दे आर डूइंग ऑन दैट, whether that is going to have the positive impact or negative impact on the society. That is what you call as analysis. The analytical mind has to be there. Communication skills. हम लोगों 4 लोग में खड़े हैं ना, ऐसे हमारा ग्रुप है, वहां हम लोग इतनी बड़बड़ करते हैं, और यही बंदे को अगर किसी प्रोफेशनल, सपोज यू आर गोइंग टू अ CFO, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, और उससे जाके तुमको इंटरव्यू लेना है या उससे जाके बात करनी है, वो सामने जाके ऐसे हमारी बोलती बंद हो जाती है. वी नीड टू हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाट, व्हेन, हाउ मच, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किसके साथ बात करनी है, कितना समय बात करनी है, किस लेवल तक की बात करनी है. अब अगर मेरे पास कोई सपोज भंगार वाला आ रहा है, तो मैं उसके साथ में ये नहीं बात कर सकता हूं यार मुकेश अंबानी की कंपनी कितनी बड़ी हो गई. और अगर मेरे पास कोई प्रोफेशनल आ रहा है यहां पे ऑफिस में बात करने के लिए, उससे मैं ये चर्चा नहीं कर सकता हूं यार बाहर कितना कचरा हो रहा है. देयर आर द डिफरेंट टॉक्स एट डिफरेंट प्लेसेस विद द डिफरेंट पीपल विद द डिफरेंट लेवल्स, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एज कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं अगर यहां पे आता और आपके साथ में मैं सिर्फ वो लॉकडाउन में कैसा चल रहा था, कोविड कैसा था, यही अगर बात करता, तो आप तो पहले 5 मिनट भी निकल के चले जाते, जाने दो यार ये बकवास है बंदा. But when I started I started talking about only the careers, you were intending, हाँ ठीक है यार यही सुनने आए थे हम लोग, और प्रोबेबली सो है ना. हाँ नहीं तो ऑनलाइन वालों का तो ठीक है, बंद करके बैठ गए, आपके पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है ना. खैर ऑनलाइन वाले भी बैठे हैं बेचारे, जब से उतने ही है, सब ठीक चल रहा है ना ऑनलाइन. ऐसा वो बच्चों के साथ जब हम लोग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ऐसे बात करते रहते हैं हम लोग बीच में. क्या होता है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू रीच टू आवर प्लेस, so that's why we have kept at this point in time, we have given both the options, offline as well as online. In fact 3 options, offline क्लास भी चलेगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी, और ये ऑनलाइन वाला रिकॉर्ड होगा और बाद में रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा, और बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस मिलेगा. तो पहले हम लोग जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे ना, उस समय पे एक दिन का क्लास मिस किया मतलब अगले 3 दिन तक के हम लोग फ्लैट होते थे, यार क्या चल रहा है क्लास में. आजकल बंदे को कोई टेंशन ही नहीं होती है. सुबह थोड़ा लेट उठा, नहीं आज मैं ऑनलाइन करेगा, और थोड़ा लेट उठा, आज मैं रिकॉर्डेड देखेगा. दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल, नो, बट अटेंडिंग द क्लास इन द क्लास is a different feel altogether. So we suggest normally a person should come offline and attend the class in the class itself. Self determination. वो मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूँ ना, जब भी वो सीए की क्लास स्पेशली पढ़ाता हूँ, तो उसमें पहले दिन पूछता हूँ मैं लोगों को, तुम में से कितने लोगों ने डिसाइड किया कि मैं सीए बनेगा खुद होके, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला हुआ है, तुम्हारे दोस्त यार परिवार इन्होंने नहीं बताया हुआ है, क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, क्योंकि मेरी सहेली कर रही है इसलिए मैंने करना है. नो, you have decided it yourself. If that is the case, that is what you call as self determination. क्यों? अदरवाइज ना हमारे पास ब्लेम करने के लिए बंदा रेडी होता है. सपोज कुछ गड़बड़ हो गई बाद में, तो इमिजिएटली, अरे तुम्हाला पहिले सांगितलं होतं मी, तुम्हाला नाही करायचा हा कोर्स, तुम्ही जबरदस्ती करायला लावलं. ये पेरेंट्स को जाके बोलते हैं हम लोग, which is not correct. You decide it yourself. Self determination has to be there. Hard working. पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ये हमने घर में कई बार सुना है. और जब पढ़ाई करना चालू करोगे ना, जब प्रोफेशनल कोर्स में आओगे ना, तब तुमको ये रियलाइज होगा कि ये बात तो सही है कि पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. और हम लोग देखते हैं यार, हमारे पेरेंट्स सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं, रात को 9 बजे वापस आते हैं. सच बात है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. बट आई वुड से इफ यू पुट इन द स्मार्ट वर्क, डू द हार्ड वर्क एट द राइट टाइम, दैट इज व्हाट यू कॉल एज स्मार्ट वर्क. कि हम लोग आने वाले 5 साल में इतनी मेहनत कर लें कि अगले 50 साल या 40 साल या 30 साल XYZ जो भी साल रहेंगे, तब तक हमारे ये वाले एफर्ट्स हमको रिटर्न्स देंगे, और ये 4 साल हम लोग चिल करेंगे, और फिर आने वाले 40 साल तक के एफर्ट्स डालेंगे. यू डिसाइड इट योरसेल्फ हाउ यू वांट टू गो अहेड. पेशेंस हैज टू बी देयर. दीज डेज पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. वो बंदे का एक सवाल नहीं बनता है क्लास में,
क्वेश्चन कर रहा है और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। वहां वो बेंच तोड़ रहा है, पेन तोड़ रहा है, एकदम उसमें अजीत डोवल आता है, माइक तो सॉरी मोबाइल तोड़ रहा है। अजीत डोवल दिखाया ना, कौन सी पिक्चर आई थी, उरी उरी, हाँ उसमें बात करता है, मोबाइल तोड़ देता है उसके बाद में। हमारा भी मन ऐसे ही कर रहा है। थैंक गॉड घर वालों ने स्मार्टफोन दिलाए हैं। बंदा आजकल चलते फिरते गिरता है ना और ऐसे टक कर आवाज आती है तो बंदा सोचता है यार भगवान करे हड्डी हो मोबाइल ना हो, क्योंकि बंदा टूटी हुई हड्डी के साथ जी सकता है, टूटे हुए मोबाइल के साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है ना। वेल एनीवेज, पेशेंस हैज टू बी देयर, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, दैट एटीट्यूड। क्योंकि कई बार हमको फीलिंग आती है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे, इफ आई हैव डिसाइडेड आई कैन डू इट, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर। कमिटमेंट टू व्हाट यू आर डूइंग, मैंने एक बार डिसाइड कर लिया that I am going to pursue a professional course, I am going to follow it, I am going to complete it and then I am going to come back. That is what you call as commitment. Forward looking attitude has to be there. There has to be optimism, positive thinking. हर चीज, अब कोविड ने हमें हमारी जिंदगी में इतनी निगेटिविटी लाई थी, पर अचानक जनवरी फरवरी से हम लोग देख रहे हैं सब चीज नॉर्मल हो गई. Everything got converted back to the original form. Which means what? Positivity can overrule negativity at any point in time. तो इसलिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो हर चीज पॉजिटिव दिखती है. द करेज एंड एम्बिशन हैज टू बी देयर. इफ यू आर नॉट एम्बिशियस इनफ then going ahead is always a tough task. Ekatvam, I'll just give a brief explanation about Ekatvam. We basically Ekatvam is basically oneness of all. अगर आप एकत्वम का लोगो देखोगे ना, वहां पे 3 बंदे दिख रहे हैं. We consider this as the student, the teacher and the parents. We 3 have to come together. That's why it is called as oneness of all, to grow and develop the career of the student. That is what we are trying to for last so many years. It is a realization that we are woven together through our consciousness and hearts. What we do here, we basically carry out the activities, multiple of the activities. The experience of the teachers, if you consider, on an average 25 years, on an average. S.M. Joshi 39 years into teaching, G.B. Joshi 32 years in teaching, Sucharit Rajyadeksha 27 years in teaching, Subodh Shah sir 31 years in teaching, Abhishek Zavre sir teaching for last 16 years, myself teaching for last 20 years. So if you do the averaging of this, like हर बंदे ने, मतलब SM सर और GB सर और सुचरित सर, इन्होंने तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ा लिए ऑलरेडी. For me, for Abhishek sir, we also have taught somewhere around 50-60,000 students. इतने स्टूडेंट्स आज तक आगे बढ़े हैं और कई सारे बंदे CA भी बन चुके हैं out of that particular lot. The quality that we follow is everything that we are expecting to. Because what happens is, when I am talking about something, I need to talk from the core concept point of view. And if I'm not talking from the core concept point of view, then there is no use of it. मैं अगर एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं तो उसके बारे में पूरा डिटेल प्रैक्टिकल क्या होता है उसके बाद में प्रॉब्लम्स पे आता हूं. We are not following the 12th वाला practice. Then we do have the regular tests. अभी बेचारे बच्चे ऊपर बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं for the 12th standard. Use of technology, you are experiencing it yourselves. We are having a lecture which is going on in the class. We are not using any kind of whiteboards. I don't remember last when I had used a whiteboard. And we have something going on live, everything technologically connected. The 24/7, of course it is not typically 24/7, but all the faculty share their personal numbers with the students, and those respective students can ask the questions at any point in time to the faculty. मतलब मैं तो लगभग सुबह 7 बजे यहाँ पे आता हूँ, शाम को 7 बजे तक यहीं रहता हूँ. So they can come, connect and ask the questions at any point in time. Proven results in our past exams. अभी recent example अगर बताऊँ आपको, December 2021 का जो result आया था, ICI declared the result of 30% at CA Foundation. Whereas our result for Ekatvam was 56%. The result at CA Intermediate, ICI had declared at 10%. Both group जो लोग पास हुए थे 10%. And Ekatvam का result था 32% for CA Intermediate, both group जिन्होंने पास किया. और जो single group वाले थे, ICI का result was somewhere around 17-18%, but Ekatvam
we had the result of 52% in that. So we can prove it every time. We have the communication with the parents on a regular basis, and of course we have the celebrations. Recently हमने एक program conduct किया था called as अतरंगी, बहुत ज़्यादा popularize हुआ. Almost every student, 700 students attended it in a single auditorium, and it was the program originally planned for 2 to 2.5 hours, which went on for 6 hours. इतनी सारी एक्टिविटीज थी. तो एंड स्टूडेंट्स डिडंट लीव कि यार हो गया अब मैं हम लोग जाते हैं, बोर हो रहे हैं, ऑल दैट. दे केप्ट रिमेनिंग देयर. शाम को 4 बजे से प्रोग्राम चालू हुआ, 9:30 बजे खत्म किया हमने. Whereas the original plan time was 7:30. 7:30 को खत्म करने वाला प्रोग्राम हमने रात को 9:30 बजे खत्म किया. That was the situation. And we do have the picnic on a regular basis. इस बार भी सितंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं वापस से. Well, so this is our Ekatwam family. On the extreme left, it is ऋषभ जैन sir, the youngest amongst all. वो गलती से मेरा मतलब गलती से क्या वो फोटो चेंज ही नहीं कर रहे हैं ये लोग. That's me. वो जो दाढ़ी वाला बंदा है. Then in center it is GB Joshi, Sucharit Rajadhyaksha, and then Disha Rajadhyaksha ma'am. Then the two sitting are SM Joshi on the left and on the right hand side, and 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 on the left hand side. So these are the team which we follow. These are our contact details. At any point in time you are requiring anything, the online people can take the screenshot of this. If you are requiring the contact details, you can just have it. And if you have any kind of questions, now the house is open for all the questions and queries. Correct. After 12th, foundation will be conducted immediately, intermediate 1 year, yes. Along with BCom, articleship will get over probably. बराबर है ना. तो 12th के साथ में फाउंडेशन हो गया, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ इंटरमीडिएट चलेगा. एसवाई चालू होते होते आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, और एसवाई टीवाई के साथ आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी. 3 years था, बराबर है ना. तो अभी 2 साल लगेंगे ना, तो बीकॉम के साथ खत्म हो जाएगा ना. अब बीकॉम के साथ ही खत्म होगा ना. यस, ऑनलाइन या 5 years. Online also, if anyone has any kind of doubt. As far as the brochures are concerned, those are available in the office for the 11th standard at this point in time, because for you will be requiring 11th standard brochures only. Those brochures are available in the office. You can get the details. And for those who are online, you can contact on this number 9579807980. They'll be sending the brochure to you on WhatsApp as well. They are completely connected on that. Yeah, if anyone else have any kind of question, so that will be given in the detail. But okay, उद्यापासून. अच्छा, एक्झाम जी आहे ती देणार आहे. बर, करेक्ट. नुसता बीकॉम, बाकी कुठलाही नाही. करेक्ट. For that, I'll talk to you in the office. We can discuss it. There is no problem. आत्ताच 10 मिनिटातच. हाँ, yes, no problem. हाँ, online if anyone has any kind of question. I think the fee, expenditure, etc. I've clarified on that. Okay. So I thank you all on behalf of Ekatwam for attending this session. I hope I have tried to put forth all the points that were there in your mind. Still, if you have got any kind of questions or queries, you can keep communicating to our office number, and we'll keep giving you the details on that. Thank you very much.